Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about inner product spaces, which is very important concept. Inner product spaces. So before I start the definition of inner product space, I would like to give you some properties of dot product in R2 and R3. So in these usual spaces, R2 and R3, where U and V are of this form, like U1, U2, V1, V2. You could also write U1I plus U2J in a plane, or V1I plus V2J. So it is up to you how you denote. So in R2 and R3, you know about the length of a vector, which is also called magnitude of U, and you compute it like this: U1 square plus U2 square. Similarly, you can define the dot product of two vectors in R2 and R3. More specifically, if I talk about R2, then you have U1 V1 plus U2 V2. Similarly, you can define angle between the two vectors like U dot V divided by magnitude of U and magnitude of V. So these are the concepts that you are familiar with when you work in R2 and R3. Now what we want to do, because in previous lecture I have told you these are vector spaces, but we do have other vector spaces like the vector space of matrices. We could write in general form like this: vector space of the continuous function defined on the interval AB, the space of polynomials of degree n or less. Similarly, the space of continuous function over the whole, that are continuous over the whole real line. So what to do in such kind of spaces if we want to compute the magnitude of some vector or angle between two vectors or product of two vectors, dot product of two vectors, because every element of a vector space is called a vector. So all these entities are vectors. So we are going to generalize all these concepts to work for more general vector spaces. To generalize this concept, we have to use the notion of inner product in replacement of dot product. So magnitude will be replaced by norm of a vector, and the word perpendicular will be replaced by orthogonal. So inner product is actually a generalization of dot product. So if you recall the properties of dot product, U dot V is equals to V dot U, commutative property. Similarly, U dot V plus W is U dot V plus U dot W. U dot U is always greater than or equals to 0. U dot U equals to 0 if and only if
u equals to 0 and alpha u dot v is equals to alpha u dot v. So these are the properties of dot product you are already familiar with. If you transform such properties into another notation to be called as the inner product, so let us formally define what is inner product space. Let V be a real vector space and inner product on V is a function that assigns to each pair UV belonging to vector space V a real number denoted as UV. So this is the notation for inner product. It will give rise to a real number. So in general, we write like this. So these places are for input. If you give U and V as input, then you write like this UV. So there are axioms that need to be satisfied. So U inner product with U is always greater than 0 for all U non-zero. If this happens to be 0, then the situation is the vector itself is 0. Symmetry property U V inner product is the same as inner product of V and U. This is for all UV from V. So U plus V inner product with W is the same as inner product of U and W and inner product of V and W. And the homogeneity condition, this is alpha U. Here alpha is a real number. At the moment we are dealing with real scalars. If all these conditions are satisfied, we say this function is an inner product on V, and V is called inner product space. So what we did is we have enriched the vector space so that it is more utilized in our study. रियल वेक्टर स्पेस को हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में कन्वर्ट किया तो हम इसके एडवांटेजेस को कैप्चर कर सकते हैं. Because in real situations we need to find distance between two functions, distance between two vectors, or the magnitude of a function, जो कि पहले हम सिर्फ वेक्टर्स की फॉर्म में मैग्नीट्यूड वगैरह डिस्कस करते रहे हैं, लेंथ का कंसेप्ट था, तो उन तमाम कंसेप्ट्स को अब हम जनरलाइज कर रहे हैं. तो वेक्टर स्पेस को ज़्यादा रिच कर दिया गया है. इनर प्रोडक्ट स्पेस is a vector space that is equipped with an inner product. So a vector space equipped
with an inner product is called an inner product space. Now naturally, now we will be looking at some examples. तो अगर हम स्पेस यही ले लें R2, R3 जिससे आप फेमिलियर हैं और इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर दें जैसे कि डॉट प्रोडक्ट होता है. सो डॉट प्रोडक्ट इज स्पेशल केस ऑफ इनर प्रोडक्ट. U1 V1 plus U2 V2 plus if we talk about R3 U3 V3. So you can verify all properties are satisfied. अब आते हैं दूसरी स्पेसिस की तरफ जिसके लिए एक्चुअली हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करना पड़ा. If I take the space of all continuous functions that are defined on 0, 1, so in this case if I take two vectors f and g belonging to V and we define fg equals to 0 to 1 f of x g of x dx. Now you can again verify all properties of inner product are satisfied. You can check the symmetry. Fg will be equals to gf. F plus g times h is fh plus. This is very easy because this involves an integral और integral की properties utilize करें, then you can see all these things. You could pull out alpha as common from the integral sign and then fg. And of course f this will be greater or equals to 0 and this will be 0 if and only the function f will be a 0 function. So all these properties can be checked out. If we take the space of matrices and we take two vectors a and b and define a function like this, trace of b transpose a, then all conditions of inner product are satisfied. If we take polynomials like for the sake of simplicity p2 and take two elements as vectors a naught plus a1t plus a2t square and a polynomial q b naught plus b1t plus b2t square, and we define inner product like a naught b naught, multiply this by this plus a1 b1 plus a2 b2. You can verify this definition defines an inner product. All properties are satisfied with this. There is one remark for you. There are many ways to define an inner product. On a vector space. तो ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है आप वैसे ही डिफाइन करें. These are some standard inner products that are defined on these vector spaces, but you could define any function. All you need to check is the you need to satisfy the given conditions. Okay. So let us do some examples. If I take this vector space and two elements f of x is equals to x and g of x is equals to x square, and I ask you to compute this inner product. So we have defined inner product of f and g, a definite integral
0 to 1 f of x gx. So this will be x cube dx integration would give x4 by 4, 0 to 1. So the answer is 1 by 4. So the inner product of f and g is 1 by 4. If you take inner product of g and f, of course, due to the symmetry, this will again be 1 by 4. So this is how we compute inner product with some given definition. इस वक्त हमें ये इस तरह डिफाइन करके दिया गया था. So in general, if V is a space of continuous function defined on the interval AB, then this integral from A to B f of x gx dx always defines an inner product. Now we are moving towards the concept of length, which will be called as norm in inner product spaces. So the norm induced by inner product. So the norm of U, which is also called magnitude in simple language, or size of U, or length of U, this is given as square root of the inner product of U with U. अगर आप इसको कंपेयर करें डॉट प्रोडक्ट से, तो हमने मैग्नीट्यूड को क्या बोला था, U डॉट U इसका अंडर रूट लें. तो ये एक्चुअली वही चीज है, आप डॉट प्रोडक्ट की जगह इनर प्रोडक्ट आ गया एज ए जनरल केस, बिकॉज U डॉट U आप जानते हैं ये बनता है U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, और इसी को हम कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड है. अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें यहाँ पे because this is magnitude of U scale. Similarly, if we have two vectors and we want to compute the distance between them, then that will be computed as U minus V, and inner product, and then square root. This is distance between two elements of a vector space. Distance between two vectors. अब ये वेक्टर्स फंक्शंस भी हो सकते हैं, f माइनस जी, ये मैट्रिसेस भी हो सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, also we could write like distance between f and g, distance between a and b. So inner product of a minus b with a minus b, and you take the inner product like I defined in the previous slide when I talked about space of matrices. So all the concepts have been generalized. Now we have enriched a vector space so that can be better utilized for our practical purposes. Now let us solve some example where I show you the concept of distance. So again, I take the space of continuous functions on the interval 0, 1 and take two elements f and g. F is x and g as x square. So let us compute the length of f, or size of f, or norm of f, or norm of g, and then distance between f and g. And here, to give you a better idea, I will also take an element as x cube, and I will also compute distance between g and h, so that you may see what happens when we talk about distance of two functions. So size of f is actually the inner product of f with f
and then the square root. So first we compute this. Okay, to avoid square root, we could write like this. So this will be 0 to 1 f into f dx, 0 to 1 x times x dx. So x square dx, x cube by 3. So upper limit will give you 1 by 3. Lower limit will give you 0. So this is the size of f, which is 1 by 3. You can compute the size of g by yourselves. The distance between f and g, this will be f minus g f minus g f minus g. So to avoid square root, we could write like this, and at the end we can take the square root. So sorry, यहाँ पे भी हमें फिर square root लेना पड़ेगा. Size of f is 1 by under root 3 because this is the inner product of f with f, but we need to take a square root. So this will be 0 to 1 f minus g into f minus g. So f minus g will be x minus x square into x minus x square dx. So this will be x minus x square whole square dx, and you can compute the integral, and putting limits you will get 1 by 30 and distance will be 1 by under root 30 because हमने यहाँ पे square लिया हुआ है, तो at the end square root लेना है 1 by under root 30. Now अब हम कंप्यूट करते हैं डिस्टेंस g और h का. g और h का डिस्टेंस आप इसी प्रोसीजर से कंप्यूट करें तो आप देखेंगे कि आंसर 1 बनेगा. So this is approximately 0.183. और अगर आप डिस्टेंस g और h का कंप्यूट करें f माइनस g, सॉरी g और h का, तो h माइनस g होगा. और कैलकुलेशंस की आसानी के लिए आप h को x स्क्वायर प्लस 1 ले लें. इससे ये होगा कि वो वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे और कैलकुलेशन जरा इजी हो जाएंगी. अदरवाइज यू कुड आल्सो टेक एज x क्यूब, इट डजंट मैटर. और यहाँ g माइनस एच लिखें या h माइनस जी, सिमेट्री की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो स्क्वायर रूट को अवॉइड करना है तो ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर रूट में ही कैलकुलेशन चला लें. सो 0 to 1 x square plus 1 minus x square into x square plus 1 minus x square dx. So ये कैंसिल हो जाएंगे जो मैंने इसलिए फंक्शन चेंज किया था. सो अंडर रूट 0 to 1 dx. सो इसका इंटीग्रल x होगा तो 1 का अंडर रूट 1. अब जरा इसको देखिए मैं डायग्राम में, if I sketch तो पहले केस में देखिए तो x और x स्क्वायर 0-1 इंटरवल पे, तो इसको मैं अगर 1 कह दूं 0-1, तो ये x स्क्वायर है, 0 पे 0 होगा और 1 पे 1 होगा, और so this is x square and this is straight line y equals to x. ये फंक्शन x है.
x और x स्क्वायर का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ एवरेज डिस्टेंस 0.183. So this is another advantage of inner product spaces. इससे पहले जो आप u और v का डिस्टेंस लेते थे, तो दो वेक्टर्स के डिस्टेंस से ज्यादा यूजफुल है दो फंक्शंस का डिस्टेंस जो कि तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर वो दूसरा ग्राफ ड्रा करूं इसी के पैरेलल में, तो आपको जरा आइडिया होगा कि नेकेड आई से भी आप देखेंगे कि डिस्टेंस जैसे आपने कंप्यूट किया है वही सिचुएशन जो है वो अराइज होती है यहाँ पे। लेट मी टेक अदर कलर। तो अब है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिस्टेंस। So again, if this is 1, this is x square, this will end up at 1. Second function है x square plus 1. x square plus 1 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब x 0 होगा इसमें 1 देना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका जो एंड होगा वो 2 पे होगा x square plus 1 का। तो देखिए इन दो फंक्शंस का जो डिस्टेंस कंप्यूट किया था हमने वो था 0.183 और इनका डिस्टेंस हमने कंप्यूट किया था 1। तो 1 इज ए लार्जर नंबर देन दिस। और फिगर में भी देखें तो इन दो फंक्शंस का डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो इट डजंट मैटर विच नॉर्म और विच इनर प्रोडक्ट यू डिफाइन, इन एवरी नॉर्म अगर दो फंक्शंस का डिस्टेंस दूसरे दो फंक्शंस की निस्बत कम है, दे विल बी ट्रीटेड एज क्लोज, उनका डिस्टेंस चूंकि कम है। लास्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम मैट्रिसेस और फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया था कि अगर हम ये वेक्टर स्पेस ले लें और p like 2 plus 3t plus 5t square और q 4 minus 2t plus 4t square, और आपसे ये कहा जाए नॉर्म ऑफ p निकालिए, नॉर्म ऑफ q, साइज ऑफ q निकालें और p और q का इनर प्रोडक्ट निकालें। फर्स्ट थिंग यू नीड हाउ दिस इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो मैंने एक स्टैंडर्ड आपको बताया था कि a0 b0 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यू कुड रीड द टेक्स्ट। एक्चुअली हमें वो कंडीशंस पूरी करनी है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन करना है। तो इस वक्त जैसे ये डिफाइन हुआ है तो p का p के साथ हम अगर ये कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉर्म ऑफ p, so situation will be like this। तो p का p के साथ कंप्यूट कर लें 2 plus 3t plus 5t square, 2 plus 3t plus 5t square, क्योंकि दोनों इनपुट्स यही हैं आपके पास p। मल्टीप्लाई कर दें 2 with 2, 3 with 3, 5 with 5, so you will be getting 4 plus 9 plus 25, 38. Similarly, you can compute the norm of q. Now the last is the pq. So 2 plus 3t plus 5t square input is p. The second argument input is 4 minus 2t plus 4t square. We need to compute the inner product. So 2 times 4. हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें ये डिफाइन करके ऐसे दिया गया कि इस तरह आपने इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करना है। तो आपको जैसे डिफाइन करके दिया जाएगा उसके हिसाब से कंप्यूटेशंस करनी है आपने इन योर क्विजेस और असाइनमेंट्स और अदर assessments। 3 into minus 2 plus 5 into 4, so you can compute this number 8 minus 6 plus
20. So 22, I guess. Otherwise, you could calculate by yourself. So that's it for today. Next lecture में हम further इसको explore करेंगे और कुछ properties हैं जो कि under norm satisfy होती हैं in the product spaces में, उनकी एक list बनाएंगे, like Cauchy-Schwarz inequality, what is parallelogram law, what is the Pythagoras theorem in all these inner product spaces. तो उसके लिए हम एक और लेक्चर में देखेंगे. Thank you very much.